अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। I hope my screen is visible, my voice is audible. So the target for today is कि हम लोग जितनी थियोरी आई है और जब से 7707 कोड आया है अकाउंटिंग का, वेरी सिमिलर थियोरी इन बोथ आईजीसीएसई एंड ओ लेवल अकाउंटिंग। तो जितनी कमेंटिंग, जितनी थियोरी, जितना एनालिसिस आया है, हम उस सब को आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जितना मैक्सिमम हो सकता है, ताकि जो है वो हम एग्जाम में आसानी से फेमिलियर हो सकें इसके बारे में। ठीक है, शुरू करूं? बिस्मिल्लाह। थोड़ा आगे आ जाना पीछे से लोग जो पीछे बैठे थे, प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा आगे आ। एडो इज अ ट्रेडर हु सेल्स ऑन क्रेडिट. Ado is considering changing his credit terms. He would introduce more credit checks on new customers and would increase cash discounts to 7.5% for payment within 30 days. Advise whether or not he should make these changes to his credit terms. Justify your answer by providing two advantages and two disadvantages of changing his credit terms. तो लिखना शुरू करें। If Ado will introduce more credit checks and will offer cash discounts, it will reduce the chances of bad debts और irrecoverable debts. ज्यादा बेहतर टर्म है कि हम बैड डेट्स की जगह irrecoverable debts यूज करें. And will offer cash discounts. It will reduce chances of irrecoverable debts and will enable him to reduce the receivable collection period. ठीक है, जब वो डिस्काउंट्स ऑफर करेगा तो लोग जल्दी पेमेंट करेंगे, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा. ठीक है, क्रेडिट चेक ज्यादा रखेगा तो चांसेस ऑफ बैड डेट्स कम हो जाएंगे. ये दो एडवांटेजेस लिख दिए मैंने, इसने बोला है टू एडवांटेजेस. दिस will
also reduce his profitability as discount allowed expense will increase. And by keeping strict credit checks, he will not be able to attract more customers. Making these changes are more advisable. Making these changes are more advisable and preferred. दो एडवांटेजेस लिख दिए, दो डिसएडवांटेजेस लिख दिए और अपना कंक्लूजन बता दिया. Next, Zahra and Pania are the shareholders of and directors of Q Limited. The company's directors of Q Limited have provided the following trial balance. ये सवाल का introductory remark है. Zahra and Pania would like to expand the company and increase sales. In order to do this, they are considering increasing the amount spent on advertising by 100%. Advise Zara and Pania whether or not they should go ahead with 100% increase in the amount spent on advertising. Justify your answer by providing 2 points in favor and 2 points against this case. So, once again 5 marks का है, 2 advantage, 2 disadvantage and advice. If the directors wish to increase advertising expense by 100%, it will promote sales
of the business, resulting in increased revenue and awareness amongst customers. But it will also cause increase in expenses. Furthermore, there is no guarantee that these extra advertising expenses will convert into extra sales. हो सकता है इतना मार्जिन ही ना हो कि एक्स्ट्रा सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाए. डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट will also play a vital role in the decision making process. प्रोडक्ट की डिमांड ही बहुत कम है तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डबल करने से भी कोई फायदा नहीं होगा. If revenue generated from advertising expense are greater than the revenue generated from are greater than the expense incurred from advertising are greater than the expenses incurred from advertising, then the directors should go ahead with it. Else should choose some alternative method. Am I clear? बात समझ में आ रही है भाई सबको? अहमद रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, हमारा आंसर 2 लाइंस तक एक्सीड कर सकता है, कोई मसला नहीं है. ठीक है, कोशिश तो करें कि लाइंस एक्सीड ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अप टू 2 लाइंस एक्सीड हो जाए कोई इशू नहीं है. अच्छा, मेरी डिवाइस पे लिखने में और आपके पेज पे लिखने में फर्क भी होता है. इसमें थोड़ी सी जगह ज्यादा घेर रहा होता हूं मैं. आप लोग थोड़ा सा समेट के लिखेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा. Ahmed's rate of inventory turnover for 2023 was lower than 2022. Suggest 2 problems which may be caused by Ahmed's lower rate of inventory turnover. जब इन्वेंट्री टर्नओवर लो होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? अब सवाल गौर से पढ़िएगा. ये नहीं पूछ रहा सजेस्ट 2 रीजंस फॉर द लो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर. उसका बिल्कुल अलग जवाब होता.
वो आगे कहीं ना कहीं आ जाएगा। अभी पूछ रहा है सजेस्ट टू प्रॉब्लम्स विच मे बी कॉज्ड बाय अहमद लोअर रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। दो अलग बातें हैं, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम होगा अगर लोअर रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर होगा? नंबर वन, देयर विल बी ओवर पाइलिंग of inventory resulting in cash being stuck into the inventory which could have been used elsewhere। वो पैसे जो कहीं हम लोग और इस्तेमाल कर सकते थे वो बिजनेस में फंसे रहेंगे, अटके रहेंगे। नंबर टू, the unsold inventory might be damaged or become obsolete। Higher storage cost can also be another problem। अगर तीन मांगे होते तो एक और रीजन हायर स्टोरेज कॉस्ट जरूर देता मैं। Stella started in business as a retailer on 1st April 2023. She sells one type of good only. She has not kept a full set of accounting records but has provided the following information. Stella's sales revenue was the same each month for the year to 31st March 2024. She is now considering selling on credit terms as well as for cash. Advise Stella whether or not to start selling on credit terms. Justify your answer, providing for and against starting selling on credit. When Stella will start selling on credit, it will attract new customers who will be willing to buy on credit terms. Thus, sales of the business will improve. If the business will try and keep credit checks, it will be able to sell to credit worthy customers. Moreover, the selling price charged for credit sales can be higher than that of cash sales, thus increasing the profit margin for Stella's business. But
credit sales can lead to problems of irrecoverable debts or customers paying late, leading to increase in expenses and liquidity crisis for delayed payments. Thus, overall, selling on credit terms with good credit control and attractive discount policies can be a good strategy. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं. आई होप सब कंफर्टेबल होते जा रहे हैं. सबको समझ में आ रहा है कैसे चीजें थ्योरी की लिखी जाएंगी और लिखी जा रही हैं. बढ़ूं आगे. द डायरेक्टर्स ऑफ पी लिमिटेड decided to raise $50,000 from issue of 5% debentures. State two ways in which this may affect ordinary shareholders. Number one, non-current liabilities will increase, which will increase the burden of outsiders' debt on the company. Number two, interest paid on debentures, interest charged on debentures will increase expenses, financial expenses, and reduce profits available to be distributed to the shareholders in the form of dividends. ठीक है जी. सो नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, विच विल इंक्रीज बर्डन ऑफ आउटसाइडर्स डेट ऑन द कंपनी. उससे क्या होता है? पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है? नॉन करंट लायबिलिटीज को मिलती है. इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, नॉन करंट लायबिलिटीज आर गिवन प्रायोरिटी ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स. इस तरह भी फ्रेम कर सकते हैं इसको. तो दो बातें करेंगे, एक इंटरेस्ट वाली बात करेंगे और एक बर्डन ऑफ डेट्स वाली बात करेंगे कि इंसॉल्वेंसी के केस में पहली प्रायोरिटी लायबिलिटीज की होती है. जो लोग ऑनलाइन हैं, अगर उनको किसी को सवाल पूछना हो तो प्लीज वो YouTube लाइव चैट पे डाल सकते हैं. मैं वहां से सवालात देख के अगर जरूरत होगी तो जवाब दे दूंगा.
जी, आप जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आपने सही लिखा है, इट्स एक्सेप्टेबल। जी। Will reduce profits available to be distributed to the shareholders in the form of dividends. Am I clear? State the accounting principle which Stella is following when she treats payments for small items which may last longer than 1 year as revenue expenditure. Materiality concept. Materiality concept क्या बोलता है कि एक ही चीज छोटे बिजनेस के लिए एसेट होती है और वही चीज लार्ज बिजनेस के लिए एक्सपेंस होती है। तो ऑल्दो वो 1 साल से ज्यादा चल रहा है लेकिन वो स्मॉल आइटम है, इसलिए उसको नॉन करंट एसेट ट्रीट नहीं करेंगे, उसको एक्सपेंस ऑफ कर देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देंगे। वन एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल, द स्मॉल आइटम will be treated as expense immediately rather than being depreciated over its useful life। अब एक स्टेपलर है, उस स्टेपलर को मैं 5 सालों तक डेप्रिशिएट करूं या पहले साल ही एक्सपेंस ऑफ कर दूं। तो एडवांटेज है ना, पहले साल एक्सपेंस ऑफ कर दिया, खत्म हो गया, रादर देन depreciating it over a few years। State two advantages of maintaining a full set of double entry accounting records। When proper accounting records are maintained, the financial statements are reliable, relevant, comparable, and understandable। It eliminates chances of frauds and errors। और बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। It's easier to obtain loan, it's easier to uh, satisfy bank in case of an overdraft is needed, it's uh, important to show proper accounting records to tax and government authorities। बहुत सारे और हो सकते हैं, दो मांगे दो लिखें। Petty cash book is one of the books of prime entry। State one other book of prime entry, कोई एक book of prime entry। Sales journal, purchases journal, returns inwards journal, returns outwards journal, general journal, cash book, कुछ भी लिख सकते हैं।
Two advantages of using of books of prime entry. Books of prime entry helps in minimizing errors and can be used as a source of reconciliation in case of fraud or errors. It also enables in tracking the transactions. जी ये भी लिखा जा सकता है कि रिकॉर्डिंग इज प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर different domains of different books of prime entries. अच्छा जी, ये कमेंट आप लोग पहले खुद लिखें, फिर मैं कमेंट कराता हूं. कह रहे टोया owns a factory which makes dolls houses. Her financial year end is 31st January. At 31st January 2024, her ledger accounts include the following balances. Either a competitor of Toya's has decided to cease trading. He has offered to sell his inventory of finished goods to Toyo at a discounted price in return for immediate payment in cash. The total price of these items is 9600. Toyo has 1415 cash at bank. Advise Toya whether or not she should buy Ader's inventory. Justify your answer by providing 2 points for and 2 points against buying. 5 मार्क्स का है, 2 points for लिखने हैं, 2 points against लिखने हैं और एडवाइस लिखनी है. अच्छा, एडवाइस देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर. You just need to ensure that you are giving a justifiable statement. Am I clear? So I am giving you 3-4 minutes. इसका आंसर खुद लिखें, फिर मैं लिखवा. अब फ्रेंड समझ में आ गया ना आंसर लिखने कैसे हैं? खुद लिखेंगे तो ज्यादा सीखेंगे. सिर्फ मैं लिखवाता रहूंगा तो एट टाइम्स आपकी अंडरस्टैंडिंग शायद उस लेवल की डेवलप ना हो. आप लिखें, मैं फिर लिखवा दूंगा, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी अपनी गलती. डिस्कस करने का दिल होगा तो हो सकता है आपके पॉइंट्स बेहतर हो, मैं बोलूँ हाँ वो पॉइंट बहुत अच्छा लिखा आपने. लिखना शुरू करें.
लिख लिया भाई? Either a competitor of Toya's has decided to cease trading. He has offered to sell his inventory of finished goods to Toya at a discounted price in return of immediate payment in cash. Competitor जा रहा है, मेरे लिए तो अच्छी बात है, सस्ते पैसों में दे रहा है और अच्छी बात है, लेकिन इमीडिएट कैश मांग रहा है, बुरी बात है, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अग्री? The total price for these items is 9,600. Toya has 1,415 cash. Advise Toya whether or not she should buy Ader's inventory. Justify your answer, providing 2 points for and 2 points against. Toya, if Toya buys inventory from the competitor at a discounted price, it will enable her to increase market share. It will enable her to increase market share and will also enable her to earn higher profits and attract new customers. But since she has to pay immediately and she only has $1415 in the bank account, while the amount needed is $9,600, she will have to either acquire loan and pay interest on it, or she will have to introduce additional capital or sell surplus non-current assets. ये कुछ चीजें हैं जिससे वो कैश रेज कर सकेगी. Thus, buying these goods is definitely advisable if she can arrange funds for it. बात समझ में आई बेटा? अच्छा जी, किसी ने मुझे सवाल मैसेज किया है कि क्या हम एक्स्ट्रा शीट्स लेके काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते. एनी वर्क डन ऑन एक्स्ट्रा शीट्स विल नॉट बी चेक. तो थ्योरी के सवाल के लिए, वर्किंग के सवाल के लिए, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेने के बाद उसको काटने के लिए किसी के लिए आपके पास एक्स्ट्रा शीट का मार्जिन नहीं है. जो करना है क्वेश्चन पेपर करना है. बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया तो ब्लैंक पेज या एडिशनल पेज जो बुकलेट के अंदर होगा उसको यूज कर लीजिएगा, वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो में. वरना डू द थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम. सोच समझ के काम करें.
Done. Dean and Yadid are lawyers who have been in partnership for many years. The partners provided the following trial balance. State one reason why the partners might consider reducing their drawings. The partner might reduce drawings to avoid interest on drawings. जो सबसे बड़ी वजह होती है ड्राइंग्स रिड्यूस करने की, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अवॉइड करना होता है. एंड टू ensure that the business does not have liquidity crisis. मैंने दो रीजन लिख दिए हैं इसलिए कि जस्ट इन केस कभी दो मांग ले तो आपको दो बताऊं. एक और सवाल मुझसे पूछा गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी वर्किंग फिर कहां करें अगर एक्स्ट्रा शीट नहीं लेंगे तो. उसको क्वेश्चन पेपर पे ही करी जाती है जैसे मैंने सिखाई है. अब ब्रैकेट्स में डाल के कर दें, ठीक है, या जो है वो वर्किंग वन W2 W3 लिख के करें और जो जगह बची हुई होती है उसमें कर लें. Which accounting principle reflects the partner's intention to continue trading indefinitely? कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं indefinitely? Going concern concept. Is everyone following me? The partners employ one lawyer and one office staff. The lawyer, Lakia, is paid $25,000 but has decided to leave. Tadeen and Yadeen have found a replacement lawyer, Raim. He has worked as a lawyer for 15 years and is well known in the local area. However, Raim wants to be a partner in the business rather than an employee and would expect a 40% of residual profit of the partnership each year. Advise Tadeen and Yadid whether or not they should offer Raim a partnership. Justify your answer, providing points for and against. फिर 5 नंबर हैं, 2 for, 2 against और 1 advice.
by offering rhyme by offering rhyme partnership in the business, he will bring with him additional capital, expertise, since he is a lawyer and is well known in the area, will enable the business to attract new customers. But since he is not an employee, he will, yeah, इस तरह लिख लें, but since he will be a partner, since he will be a partner, he will get share of profit rather than employment salary, and will also be involved in the decision making process and running the partnership. He will get share of profits rather than employment salary and will also be involved in the decision making process and running the partnership. Overall, offering rhyme partnership is an advisable option since apparently it will help business grow and earn higher profits and will also improve the liquidity position of the business. Is this clear, everyone? अच्छा, कुछ सवाल जो चैट की फॉर्म में आए हुए मैं जरा जल्दी जल्दी उनको जवाब दे देता हूँ, फिर अगला शुरू करता हूँ. Can working be done on the blank pages? Yes, they can be done, but my advice is try to do the workings in the space provided near the question itself. Whether the inventory is damaged or obsolete can be a disadvantage. Yes, it can be a disadvantage. Charging depreciation on non-current asset while making statement of financial position. Do we do that working on blank pages? I would prefer do it close to the question. The table we used to make for depreciation and bad debts, can it be done on space near the questions? Yes, definitely.
विच पेपर इज दिस? बेटा मैंने फाइल भेजी हुई है, उस फाइल में सारे थियरी सवाल हैं, जब से ये नया सिलेबस आया 7707 वाला। तो जब से ये सिलेबस आया उसके जितने थियोरेटिकल सवाल है ना, जितने थ्योरी सवाल आए हुए हैं, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, 7707 कोड इंट्रोड्यूस हुआ है, और जब से आईजीसीएसई का 0580 आई थिंक, पता नहीं जो भी कोड है, वो जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो सबसे जो जो जिस लेवल के, जिस तरह के थियोरेटिकल सवाल आते हैं, वो सारे ओ लेवल, सारे आईजीसीएसई के सवाल ये कंपाइल किए हुए हैं मैंने, कोई 90 पेज हैंडआउट में, ये हैंडआउट भेजा हुआ है, उसी से सारे सवाल कर रहा हूँ। State the meaning of the following terms: receipts and payments account. Receipts and payment account is an alternative of bank account when cash comes into the business. It is recorded as receipts. And when cash goes out of the business, it is recorded as payments. नहीं, समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिसीट्स एंड पेमेंट्स नहीं होती है। किसी को ऑन कैंपस भी कोई कमेंट करना हो तो प्लीज पूछ सकता है। बेटा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है द बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स कोर्स ऑफ ऑपरेशंस इन द फोरसीएबल फ्यूचर। आने वाले वक्तों में बिजनेस चलता रहेगा। बेटा हैंडआउट हैज बीन शेयर्ड ऑन द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। जो लोग मुझसे मैथ पढ़ते हैं, मैथ के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ है, और मास्टर क्लास वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ है, सारी जगहों पे शेयर किया हुआ है। Consistency concept means accounting policies and procedures cannot change from one accounting period to another. If depreciation is 10%, अगले साल 15% नहीं हो सकता, ठीक है? Until and unless new method better reflect कर रहा हो true and fair view of the business performance. But बार बार आप method change नहीं कर सकते। Going concern का मतलब है the business will continue its course of operations. Business आने वाले वक्तों में चलता रहेगा। I hope this answers all questions. Accumulated funds का क्या मतलब होता है? Accumulated funds is an alternative term used for capital in non-profit organizations. Since non-profit organizations do not have owners, therefore the funds accumulated by members to run the club are called accumulated funds. I hope सब follow कर रहे हैं।
Ajay has been trading for 3 years and he has established a good reputation. He has never changed his selling price. His gross profit margin for the year ended 31st March 2024 is higher than the previous year. उसने सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करी, उसकी रेप्यूटेशन अच्छी है और उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दो चीजों पर डिपेंड करता है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स. Suggest one reason why Ajay's gross profit margin has increased. अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करी तो किस वजह से होगा? रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई है. His gross profit margin has increased because his cost of sales might have reduced because of low cost purchases agree. State one reason why Ajay's customers might be interested in his financial statement. Customers को क्या जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? लिख सकते हैं, 1 मार्क का है, खाली रिडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल लिख लो, वो भी काफी है. State one reason why Ajay's customers might be interested in his financial statement. Customer financial statements में क्यों interested? क्वालिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वालिटी पता चलेगी प्रोडक्ट की. फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे पता चलेगी? हाँ, तो कस्टमर्स का इंटरेस्ट क्यों है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? Too far fetched. Gee, I'm doing all types of possible questions in theory. Ajay's customer might be interested in his financial statements to ensure that they are not being overcharged. कस्टमर का तो यही इंटरेस्ट है ना, मुझे सस्ते से सस्ता मिल जाए. So their interest is to ensure that they are not being overcharged. जो पैसे उनको चार्ज किए जा रहे हैं सबको वही किए जा रहे हैं या उनको सबसे कम चार्ज किए जा रहे हैं? And the business has a good standing. Ajay is concerned about the levels of his inventory and trade receivables. He is considering reducing his selling price. Advise Ajay whether or not he should reduce his selling price, justifying your answers by providing advantages and disadvantages of reducing his selling price. 5 मार्क्स का है, 2 एडवांटेज दें, 2 डिसएडवांटेज दें, डिसीजन लें. If Ajay, beta,
मैं जब से सिलेबस नया आया है अकाउंटिंग का, तब से टिल 2025 जितने पास पेपर्स आए हैं उसमें जितनी थियोरी है वो सारी इस हैंडआउट में है। हम स्लोली एंड ग्रेजुअली एक एक सवाल करते जा रहे हैं, हम सारी थियोरी कवर करेंगे। तो यू नीड टू बी पेशेंट इनफ फॉर योर फरमाइशी प्रोग्राम। तो आप जो थ्योरी बोल रहे हैं वो आएगी, लेकिन जब आएगी तब तक के लिए इंतजार कीजिए और वेट कीजिए प्लीज। If Ajay will reduce his selling price, it will enable him to attract more customers. His sales will increase. His inventory turnover will improve. His sales will increase. His inventory turnover will improve. And it might enable him to earn higher profits. But by reducing his selling price, he might result in lower gross profit margins thus adversely impacting his profitability. It will also improve his receivables collection period. It will also help him reduce his inventory levels that he is concerned with. If he reduces the selling price only for cash sales, it will also resolve problems of liquidity and receivables. बात समझ में आई? अच्छा, जब इसने ये मेंशन नहीं किया ना कि दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज दें, ठीक है,
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज दे दें। तो क्योंकि कंडीशन अटैच नहीं है, कंडीशन अटैच है कि 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज तो 2 2 देने, कंडीशन अटैच नहीं है तो एक को ज्यादा दे दो, एक थोड़ा कम दे दो तो भी चल जाएगा। अच्छा, ये चीपर रॉ मटेरियल वाली बात है ना, वो जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि सवाल आपसे रॉ मटेरियल की तो बात ही नहीं कर रहा। सवाल कह रहा है सेलिंग प्राइस रिड्यूस करेगा तो क्या होगा। उसने कहीं नहीं बोला कि चीपर रॉ मटेरियल यूज करे, सेलिंग प्राइस इस वजह से रिड्यूस कर रहा है कि उसने क्वालिटी खराब कर दी है, ऐसी बातें बोल नहीं रहे सवाल। जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 3 डिसएडवांटेज 1 एडवांटेज ले लें, तो फिर आप जस्टिफाई करें अपने बात को, अपनी स्टैंड को, और लिखें कि भाई नहीं, इसको सेलिंग प्राइस नहीं करनी चाहिए। Although Ajay's gross profit margin has increased, his profit margin has fallen. For each of the last 2 years, sales revenue is Ajay's only income. कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज किया है लेकिन प्रॉफिट कम हो गया है, ऐसा क्यों? नंबर 1, Ajay has a poor control over his expenses. The sales volume has fallen. जब सेल्स वॉल्यूम कम होता है तो मार्जिन पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो सेल्स वॉल्यूम गिर गए या उसका एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, यही 2 रीजन हो सब। डन। Umar buys all his supplies from Alexander, who does not allow Umar any trade discount. Umar is now considering also purchasing supplies from Tahir, who would offer him 3% trade discount, but no cash discount. Advise Umar whether he should choose option 1, purchase supplies from Alexander only. Option 2, purchase supplies from both Alexander and Tahir. Justify your answer by providing 3 advantages and 1 disadvantage of the option you have chosen. अब सबसे पहले तो आपने ऑप्शन चूज करना है, इसको दोनों को एनालाइज बैलेंस नहीं करना। इसमें बोल दिया ऑप्शन जो चूज कर रहे हो उसके 3 एडवांटेज बताओ और उसका 1 डिसएडवांटेज बताओ। मुझे लगता है ऑप्शन 2 इज अ बेटर ऑप्शन, परचेज सप्लाईज फ्रॉम बोथ अलेक्जेंडर एंड ताहिर। क्यों? लिखें, इफ उमर बाइस, ऐसे लिखना शुरू करें क्योंकि हमें चूज करना है, तो उमर शुड चूज ऑप्शन 2 and purchase his supplies from both Alexander and Tahir. This way, he is not dependent on a single supplier. पहला एडवांटेज। अग्री?
He will be able to achieve trade discount when buying goods from Tahir. Agree? He will be able to achieve cash discount when he buys goods from Alexander. Alexander ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रहा, कैश डिस्काउंट तो दे रहा है, और ताहिर ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं दे रहा है। तो दोनों का एक एक बात हमने अपने एडवांटेज में इस्तेमाल कर ली। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट of the two suppliers might be different, adversely impacting the brand image of the business. तो डिस्काउंट्स को फोरगो करेगा। बिल्कुल ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है कि if he is buying from two suppliers, he is dividing his goods purchased from two different sources and hence he will forego the bulk quantity discount. सब फॉलो कर रहे हैं? The favorite book club was formed several years ago. The subscription amounted to $52 per annum, has remained unchanged since the club started. All subscriptions are paid by check or credit transfer. The treasurer is considering increasing subscription amount in order to obtain sufficient funds to purchase computer equipment. The equipment would cost $400 and would be used to maintain the club records. Advise the treasurer whether she should fund the purchase of the computer equipment by increasing the subscription amount. Justify your answer by making points for and against increasing subscription account. Calculations are not required. लिखिए। If the treasurer would increase subscription, it will cause discomfort amongst the members, as the increase in subscription will be annual, but computer equipment
is only needed this year. मेंबर्स को ये परेशानी है कि आप हर साल मेंबरशिप फी बढ़ी हुई लोगे, कंप्यूटर इक्विपमेंट तो एक ही दफा चाहिए ना, तो हर साल क्यों मेंबरशिप फी बढ़ी हुई? तो ये एक पॉइंट अगेंस्ट इंक्रीजिंग द मेंबरशिप फी है. न्यू मेंबर्स might not be attracted at higher subscription charges. Agree? If instead of increasing subscription, if instead of increasing subscription, loan is obtained to buy the computer, the surplus will decrease as interest expense along with depreciation charges will be incurred. Since computer equipment is only costing $400, a slight increase in subscription might not have adverse repercussions. Instead, the extra amount generated in successive years, instead extra amount generated in successive years will add to expansion of the club. Agreed? Ladies, gentlemen, boys, girls, क्या सब मुझे फॉलो कर रहे हैं? समझ में आया किस तरह लिखना है? आखिरी में मैंने ये लिखवाया कि कंप्यूटर इक्विपमेंट तो सिर्फ $400 का है, तो इसका मतलब जो इंक्रीज इन सब्सक्रिप्शन होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा. अग्री? अगर इंक्रीज इन सब्सक्रिप्शन बहुत थोड़ा सा है तो जो सब्सक्रिप्शन इंक्रीज करने के डिसएडवांटेज हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होंगे. ठीक है? या बिल्कुल भी नहीं होंगे. $1 या $2 सब्सक्रिप्शन बढ़ने से किसी मेंबर को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास हर साल के लिए एक सर्टेन कैश जेनरेट हो जाएगा, उससे हमारी लिक्विडिटी क्राइसिस अवॉइड हो जाएंगी, हम क्लब को ग्रो कर सकेंगे. ये बात लिखवाइए. लेडीज, जेंटलमैन, बॉयज, गर्ल्स, आर यू ऑल विद मी? Aquila and Darius's partnership agreement provided for salary, interest on capital, interest on drawings, and profit share. State two other items which are usually included in partnership, which are usually included in partnership agreement. Commission. देखें क्या क्या आता है. इंटरेस्ट,
salary, bonus, commission, share of profits. Are you all with me? उसके बाद Aquila and Darius are considering forming a limited company. They would be the only two shareholders in the company. Advise Aquila and Darius whether they should form a limited company. Justify your answer with two advantages, two disadvantages of forming a limited company. चलें जी, लिखें खुद से, फिर मैं डिस्कस करूं. Please write this yourself and then I will discuss.
हैव यू रिटन इट? लिखेंगे तो सीखेंगे। चले मैं लिखवा रहा हूँ। Aquila and Darius are considering forming a limited company. They would be the only two shareholders in the company. Advise Aquila and Darius whether they should form a limited company. Justify your answer with two advantages and two disadvantages. लिखिए। When the partnership business will form a limited company, it will become a limited liability company. Thus, the liability of each partner will be limited. लिख लिया? Moreover, the business will be a separate legal entity and will have better financial representation, and it will be easier
to obtain investments and loan. Agree? But limited company has to pass through lots of legal requirements which are very tedious, time consuming, and has lots of formalities. Limited company will have to represent its financial statements as per international accounting standards. Are you all agreeing? Sivan maintains a petty cash book using impressed system. The impressed amount, which is $200, is restored every Wednesday. State one way Shivan could pay his suppliers from his bank account, other than by check, online payments.
Agree? Advise Shivan whether he should stop using cash. Justify your answer by providing two advantages and two disadvantages of using cash. When cash is used to make payments, the payments cannot be tracked and there are more chances of frauds, errors, and embezzlement. Embezzlement का मतलब होता है जब कैशियर कैश चोरी कर रहा होता है बिजनेस से। और थोड़ा सा है। ठीक है जी। मोर ओवर ये तो एडवांटेज हो गया कैश पेमेंट को स्टॉप करने का कि जब कैश पेमेंट होती है तो ये मसले होते हैं। सो बाय स्टॉपिंग कैश पेमेंट्स these problems will be resolved. When cash payment stopped, all transactions will be made by bank, making all payments officially documented. Making all payments officially documented. Disadvantage of stopping using cash is that all petty cash transactions are also passed through the bank, making reconciliation a tedious task. Reconciliation बहुत मुश्किल हो जाएगी. Making reconciliation a tedious task. Moreover,
Moreover, it will also increase bank charges as too many bank operations will be involved. Thus, it is advisable to have both options. All official payments should be made through bank, and petty cash transactions should be made by bank, should be made through cash. नो चांसेस ऑफ चेक्स बाउंस्ड, कोई बहुत खास एडवांटेज नहीं है लिखना. Stella is a sole trader who sells on credit. She maintains a provision for doubtful debts at 4% of receivables. State two reasons why Stella should maintain provision for doubtful debts. Prudence concept, provision for doubtful debts are expected losses, and as per prudence concept, expected losses are recorded as expenses. Matching concept, to match expenses of one accounting period with revenues of that period. Do you all agree, everyone? Salman owns a footwear factory. He sells to all of the three local shoe shops. Salman prepares his financial statements to 30th April each year. Salman is considering converting some of his office space into additional factory capacity. Advise Salman whether he should convert some of his office premises from office use to factory use. Justify answer by providing arguments for and against this conversion of factory space into additional factory capacity. If office space is converted to factory capacity, it will enable Salman to produce more goods. If there is a higher demand for this product, then this is a viable option
and must be availed. No extra rent will be incurred in hiring a new place. If office space is not being used, then it is a better utilization of premises. If the product he is selling does not require sales office or display centers, then this strategy is very useful. But if display is needed, meeting space is required, then converting office to factory is not advisable. Similarly, if there is no need to increase factory capacity, similarly, if there is no need to increase factory capacity, then this move is not recommended. Done? समझ में आया? I hope everyone is following me. Then this move is not recommended. Similarly, if there is no need to increase factory capacity, this move is not recommended. Done? The directors who are also shareholders would like to expand the company and wish to borrow $50,000 to fund the expansion. They are considering whether to issue further ordinary shares or to request long-term bank loan. Suggest two reasons why, although the company has made profits, there is little cash available in the bank account to fund expansion.
There is a difference between profitability and liquidity of the business. The profits generated might be because of credit sales. Agree? तो अगर आपने प्रॉफिट क्रेडिट सेल्स की वजह से कमाया है तो प्रॉफिट तो है, कैश नहीं है. The business might have paid a long-term debt which has become due, draining the cash available. Draining the cash available. हो सकता है कि उसने डिविडेंड्स अभी अभी पे कर दिया, बिल्कुल हो सकता है. That despite being profitable, it had good cash flow, but it distributed its cash as dividends. Advise directors whether they should fund the expansion by issuing ordinary shares or by requesting a bank loan. लिखिए. If the business खदीजा डायरेक्टर्स लिखा हुआ है ना, कंपनी है, कंपनी में ड्राइंग्स नहीं होती, कंपनी में डिविडेंड्स होते हैं. If the business funds the expansion by requesting a bank loan, its non-current liabilities will increase, comma, which will cause the outsiders' funds to increase, making it unfeasible for shareholders who, in case of liquidity, will be given the last priority. Moreover, interest will have to be paid on the
bank loan putting a dent putting a dent on the profitability as expenses will increase. On the other hand, on the other hand, when shares are issued, equity will increase. On the other hand, when shares are issued, equity will increase. No interest will have to be paid. On the other hand, when shares are issued, equity will increase. No interest will have to be paid. It will not adversely impact liquidity in future as shares are permanent source of finance and are not to be repaid. Dividends on shares are distribution of profits and not the expenses, and will only be paid if sufficient profits are made. Issuing shares is a better option than obtaining a loan.
Stella started trading on 1st April 2021. All receipts are paid into the bank and all payments are made from the bank. She has not kept a full set of books of accounts, but has provided the following information. Stella is now considering whether she should start to sell at least some of her goods on credit. Advise Stella whether or not she should start selling on credit terms. सिमिलर सवाल हम पहले लिख चुके हैं, जवाब दोबारा लिखवाऊं या खुद लिखेंगे या आगे बढ़ें, क्या करें? If she starts selling on credit terms, उससे होगा क्या क्या? मोटे मोटे points. Sales will increase. New customers will be attracted. Higher profit margin on credit sales. Improve inventory turnover or better market share. Explain how the materiality principle is applied to treatment of non-current asset. Materiality concept states that an item which is treated as an expense for a much larger business, the same item is treated as a non-current asset for a smaller business and slowly depreciated over its life. Are you all with me? Nala has charged depreciation on a shop fittings at 25% per annum using reducing balance method. This year she is considering changing this to 10% per annum using straight line method
as this would improve her profit for their intention क्या है? प्रॉफिट इंप्रूव करना इंटेंशन है. अगर प्रॉफिट इंप्रूव करना इंटेंशन है तो ये इंटेंशन सही नहीं है. अगर मेथड चेंज करने की इंटेंशन होती टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस तो इंटेंशन सही थी. इंटेंशन गलत है तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी है. तो हम लिखेंगे as per consistency concept, accounting policies and procedures should not vary from one accounting period to another. As per consistency concept, accounting policies and procedures should not vary from one accounting period to another. Should not vary from one accounting period to another. The only reason change in policy or percentage is allowed if the existing method is not reflecting a true and fair view of the business performance. The only reason change in policy or percentage is allowed if the existing method is not reflecting a true and fair view of the business performance and the new method is more reliable and relevant. Changing method to improve profitability is not permitted. Changing method to improve profitability is not permitted and is a white collar crime. And Nala should not change depreciation because of this. Depreciation method because of this reason. White collar crime is the crime performed by पढ़े लिखे लोग, accountants, ये सारे लोग.
अच्छा, शेयर्स इशू करने से क्या आइडियाज भी शेयर होते हैं? नहीं होते। अगर नया पार्टनर आता है तो वो साथ नए आइडियाज लाएगा। अगर नया शेयर होल्डर आएगा तो शेयर होल्डर कंपनी रन थोड़ी ना करता है, डायरेक्टर कंपनी रन करते हैं। शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स इन्वेस्टर्स, डायरेक्टर्स कंपनी रन करते हैं। दे आर द एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स हु रन द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द directors, on behalf of the shareholders. Directors are the people who run the company on behalf of the shareholders. तो ideas share नहीं होते। State one purpose of preparing sale ledger control account: to reconcile the control account with individual accounts in order to avoid errors, detect frauds. Done. The managing director of Emily plans to buy new equipment to be used to improve the profitability of the company. She is considering whether to fund the equipment by issuing further ordinary shares or requesting a bank overdraft. Advise Emily whether to fund purchase of equipment by issuing further. Exactly वही जवाब देना है जो अभी थोड़ी देर पहले दिया था। शेयर्स इशू करेंगे तो इक्विटी बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, डिविडेंड्स भी उस वक्त देंगे जब ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी। डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट को वापस करना पड़ेगा, शेयर्स के पैसों को वापस भी नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली सेम जवाब अभी लिखा था। Nakul is a trader. He buys and sells goods on credit. He buys most of his supplies from one supplier, Nadia, who allows Nakul a trade discount of 20%. Nakul has a bank overdraft and would like to reduce it. He is considering paying his suppliers later than he currently does in order to help him reduce his bank overdraft. Advise Nakul whether or not he should take longer to pay his suppliers. Justify your answer by providing two advantages and two disadvantages. By paying the suppliers later, Nakul will be able to sort out his liquidity crisis, his working capital cycle will improve, and his bank overdraft will not exceed immediately. And his bank overdraft will not exceed immediately. But by doing so, he will have to forego any discounts he could have received on prompt payments, thus adversely impacting profitability.
Moreover, interest will be charged on overdue accounts, further denting the profitability. Relationship with supplier will be ruined, and he might not get favorable credit terms, and he might not get favorable credit terms in future. बात समझ में आई? Thus, delaying payments to payables is not a very feasible option. इसको फॉलो कर रहे हैं भाई, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. लग नहीं रहा. State one difference between preference shares and ordinary shares. Preference shares are given fixed rate of dividends and preference over ordinary shares. Ordinary shares do not receive fixed dividends. दूसरा पूछता तो हम बोलते हैं ordinary shareholders have a voting right, preference shareholders do not have a voting right. And preference and are given preference shareholders are given fixed rate of dividends and preference over ordinary shares. Ordinary shares do not receive fixed dividends. Their dividends depend on profitability. Their dividends depends on profitability. Padma would like to expand the business. लेकिन इसका जवाब खुद वेरी सिमिलर टू व्हाट आई हैव मेड यू राइट, बट अ बिट थोड़ा सा कुछ चीजें डिफरेंट है इसमें. लेकिन आई वांट यू गाइस टू राइट इट योरसेल्फ.
लिख लिया? Have you guys written the answer? चलें जी लिखिए. Fatma would like to expand the business. She thinks additional finance of 20,000 would be required for the equipment. Fatma's bank has offered to lend her 20,000 to be repaid after 4 years at an interest of 6% per annum. Advise Fatma whether or not to agree to the bank loan. लिखिए. If Fatma agrees to the bank loan, she will have to pay 6% interest on it each year, amounting to $1,200, which will reduce profit by $1,200 each year. If the business expansion, if the expansion results in higher profits than interest expense, then she should consider it. Moreover, if
if she earns good profits and cover the amount of loan from her earnings, then it is a feasible option. Else, after 4 years, at the time of repayment, it will create liquidity crisis. Am I clear? If she has sufficient funds available in her business, she should save the interest by reinvesting funds in the business. Am I clear? हाँ, हो सकता है बैंक लोन, बिल्कुल अच्छी बात करी। हो सकता है कि जब वो बैंक लोन देगा तो उसके अगेंस्ट में कोई कोलैटरल रखेगा, और उसका कोलैटरल रखवाने के लिए कुछ है नहीं है, वो देखना पड़ेगा। एंड में मैंने बोला इफ शी हैज सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल, अगर उसके पास खुद के पास पैसे हैं या उसके बिजनेस में पैसे हैं, देन शी शुड सेव द इंटरेस्ट बाय री इन्वेस्टिंग फंड्स इन द बिजनेस। लोन लेने की जरूरत नहीं है। वन डिफरेंस बिटवीन शेयर कैपिटल एंड लोन कैपिटल, मैं एक से ज्यादा लिख देता हूं ताकि कभी ज्यादा मांगे तो आसानी हो। नंबर वन, शेयर कैपिटल is part of equity, loan capital is part of नॉन करंट लाइबिलिटी। आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिख सकते एग्जाम्स में, पूरा पूरा लिखेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी पूरा लिखेंगे। नंबर टू, शेयर कैपिटल receives interest or receives dividends, loan capital receives interest। Share capital have voting rights, loan capital has no voting rights। Are you all with me? इस तरह का सिमिलर सवाल पहले लिख चुके हैं डिटेल में, तो बस पॉइंटर्स दे दूंगा। मतलब जो सवाल पहली बार लिखवा रहा हूँ मैं पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूँ, और जो सेम अब रेपिटेशन होंगी, क्योंकि सारी थियोरी है तो ऑब्वियसली थियोरीज रिपीट होती रहती हैं, उसके मैं सिर्फ पॉइंटर्स दे दूंगा। कह रहे एडवाइस इक्वा whether she should purchase additional inventory. One of the suppliers has offered to sell a large quantity of inventory at reduced price.
टू एडवांटेज टू डिसएडवांटेज बोल दिया। अगर वो बाय करेगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल रिड्यूस, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। और क्या एडवांटेज होगा? रेडी सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी अवेलेबल। अग्री? बोल सकते हैं शी कैन ट्रांसफर लो कॉस्ट टू कस्टमर्स बाय चार्जिंग लोअर सेलिंग प्राइस, इंप्रूविंग सेल्स। अग्री? डिसएडवांटेज क्या होगा? स्टोरेज कॉस्ट विल बी इनकर्ड और चांसेस ऑफ goods being damaged will increase or liquidity will be adversely impacted। अब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं? क्वालिटी से तो फर्क नहीं पड़ा, वही सप्लायर है। मैंने तीन एडवांटेज तीन डिसएडवांटेज बता दिए, दो दो मांगे थे। ओवरऑल इफ शी कैन sell extra inventory immediately, she should go ahead with it, else she should not, क्योंकि टर्नओवर भी खराब होना शुरू हो जाएगा, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, माल पड़ा हुआ रहेगा तो। कंसिस्टेंसी अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एम आई क्लियर? स्टेट टू नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स विच मे अफेक्ट एक्वास ट्रेडिंग रिजल्ट्स। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, और ब्रांड इमेज, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, लोकेशन, क्वालिटी, ये सारे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं यूक्वा एक्वा की ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। Advise Sinita whether she should prepare bank reconciliation statements monthly rather than every 3 months. Justify your answer with two advantages, two disadvantages.
If bank reconciliation statements are prepared monthly, then errors can easily be avoided and frauds can be timely detected. The more reliable representation of financial statements can be done. But it is a time consuming task. More efforts and cost will be incurred in doing so monthly. Despite extra cost and extra time, monthly preparation of बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज एडवाइजेबल। मैं फिर बोल रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करिएगा, पूरा पूरा लिखिए। Am I clear? Huan returned damaged goods to Lucia, a credit supplier. Name the business document Huan issued. क्रेडिट नोट इशूड रिटर्न इनवर्ड्स होता है, डेबिट नोट इशूड रिटर्न्स आउटवर्ड्स होता है। हुआन ने रिटर्न किए तो उसके लिए रिटर्न्स आउटवर्ड्स हैं, तो वो क्या इशू करेगा? डेबिट। On 1st October 2020, Huan had a positive bank balance but was concerned about the business's liquidity. Huan believes her working capital can be improved. She is considering 5 courses of action. State whether each of the following course of action would increase, decrease, or have no effect on Huan's working capital. Give a reason for your answer in each case. Introduce additional capital into the business bank account. Working capital increase हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक इंक्रीज होगा, करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। सेल सरप्लस नॉन करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। व्हाई? बैंक विल इंक्रीज, thus current assets will increase, current liabilities will not be impacted. Obtain a short term loan, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज नहीं, शॉर्ट टर्म बैंक लोन है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन है तो नो अफेक्ट। करंट एसेट्स will increase, current liability will also increase. अगर ये लॉन्ग टर्म बैंक लोन होता तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर जाता। सुन रहे हो भाई? नहीं। रिड्यूस क्रेडिट सेल्स एंड इंक्रीज कैश सेल्स बाय द सेम अमाउंट, वर्किंग कैपिटल सेम अमाउंट, नो इफेक्ट। रिसीवेबल्स बढ़े या कैश बढ़े, करंट एसेट्स विल रिमेन सेम, current assets will remain same and current liabilities will not be impacted. Create provision for doubtful debts, decrease, current assets will decrease.
because receivables will decrease. समझ आ गया भाई सबको? Ladies, gentlemen, boys, girls, do you all agree? Naomi knows that the factory machinery is old and is considering replacing it with more efficient machinery. The old machine would be sold at the book value the new machine would cost 100,000. Naomi wishes to know how purchase of new machinery would affect the profit for the year. Complete the table below. Indicate the effect of the on the profit of each of the following. Annual of the wages of the factory workers would decrease by 3,000. तो प्रॉफिट 3,000 से बढ़ जाएगा. Machinery repairs 1,100 included in factory general expense would decrease by 60%. तो प्रॉफिट 60% से बढ़ जाएगा. Cost of raw material used would decrease by 10%. रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं बताई हुई है, तो मुझे कोई ना कोई फिक्टिशियस वैल्यू यूज करनी पड़ेगी. हो सकता है इसके किसी पिछले पार्ट में बताई हुई हो, क्योंकि लेकिन मैंने तो सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट कॉपी किया हुआ है. लेट्स से रॉ मटेरियल 50,000 रुपए का था, सो 50,000 का 10% रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट 5,000 रुपए से बढ़ जाएगा. The total cost of new machine would be financed by a loan on which annual interest of 4% will charge. 4% of 100,000. 4,000. So profit decrease हो जाएगा. New machine would be depreciated over 8 years. इससे भी profit decrease हो जाएगा. तो total change in profit कितना होगा? 3,000 plus 660 plus 5,000 minus 4,000 minus 12500. 7,840. Am I clear, everyone? Amount is 42100. कोई मुझे बता रहा है कि रॉ मटेरियल की अमाउंट जो है वो 42100 है. अगर रॉ मटेरियल की अमाउंट वाकई 42100 है, तो मैं 42100 ले लेता हूँ. 42100 का 10% is 4210. तो 3,000 plus 660 plus 4210 minus 4,000 minus 12500. 8630. Do you all agree? Sami has suggested purchasing goods from cheaper suppliers. State two ways in purchasing goods from cheaper suppliers may affect the business. Cost of sales will decrease, causing profits to increase. Agree? Quality of goods and dependence on suppliers might be adversely affected. Are you all with me? Aaron is considering
investing additional capital into the business to repay bank loan. Advise and whether or not he should invest additional capital to repay bank loan. Justify your answer by providing two advantages, two disadvantages of Aaron introducing additional capital. If Aaron will introduce additional capital to repay bank loan, his capital will increase and non-current liability will decrease. Overall, positively बढ़ेगा ना. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का मतलब है ओनर एक्स्ट्रा पैसे लेके आ रहा है घर से ताकि लोन को चुका सके, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी. If Aaron will introduce additional capital to repay bank loan, his capital will increase and non-current liability will decrease, overall positively impacting the business. He will not have to pay interest on bank loan in future. The disadvantage of doing so is that the amount he could have invested elsewhere is stuck into the business. The amount he could have invested elsewhere is stuck into the business. Agree? और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? Since capital is a permanent source of finance, he cannot withdraw it back. जिसने पैसे लगा दिए वो परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, अब वो विड्रॉ नहीं कर सकता. आर यू ऑल विद मी? Overall, it's advisable to introduce additional capital and get rid of the liability. सही है भाई? The directors of P Limited are concerned about the trade receivables turnover days and the rate of inventory turnover times. Suggest two ways in which trade receivables turnover days may be improved. By offering cash discount on early payments, charging interest on overdue accounts on late payments. Suggest two ways in which rate of inventory turnover may be improved. Reduce selling price or offer a sale. Reduce inventory levels.
avoid overpiling inventory. हाँ, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. One of the P Limited's credit supplier has offered cash discount of 5% for immediate payment on delivery. Normal credit terms of industry are 30 days. Advise directors of P Limited whether or not they should accept this offer. If P Limited accepts this offer, it will achieve discount received, improving profitability of the business. His relationship with supplier will improve, and he might be able to avail better discounts in future. Disadvantage: liquidity will be adversely affected as he will pay 30 days earlier, adversely impacting the working capital cycle. If P Limited do not have any liquidity crisis, do not have any liquidity problems, this is a good offer to avail. Else, it should not be taken. It should not be considered. Am I clear भाई? समझ आ रहा है? थ्योरी लिखने आ रही है? लग रहा है मैनेज कर सकेंगे अब थ्योरी? Name the ledger to which each of the following will be posted. The total of the column of travel expense, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस असल में एक कैश पेटी कैश का पार्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन के कॉलम में आ जाएगा. द पेमेंट टू हंटर, हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं. अच्छा, कौन से लेजर में आएगा बोल रहा है? तो जनरल लेजर में आएगा. ये एक्सपेंसेस जनरल लेजर में होते हैं. पेमेंट टू हंटर, सप्लायर को पेमेंट कर रहा हूं मैं. जब मैं सप्लायर को पेमेंट करता हूं तो परचेजेस लेजर. Name the accounting principle which is being applied when the figures from petty cash book are posted to appropriate ledger. Dual aspect concept. Leo received a statement of account from Hunter. State two purposes of issuing the statement to Leo. It shows summary of transactions between customer and supplier. It identifies the outstanding amount
code. Leo is considering making all payments over $50 to trade payables by credit transfer. Advise Leo whether he should go ahead with this change. Justify your answer. ये वही इससे पहले जिस तरह का सवाल था बैंक और कैश वाला, बिल्कुल सिमिलर सवाल है. सो एडवांटेज क्या होगा? पेमेंट्स कैन बी ट्रैक्ड, less chances of frauds and embezzlement. Disadvantage क्या होगा? Higher bank charges. Agree? $50 is a small amount and too many transactions involving bank, making reconciliation a complex task. Advise he should increase the payment amount by credit transfer. करना चाहिए क्रेडिट ट्रांसफर से, लेकिन $50 बहुत कम है, थोड़ी बड़ी अमाउंट है. आर यू ऑल विद मी? Name the accounting principle applied when the income statement is adjusted for rent prepaid. Accrual concept. Matching concept भी बोल सकते हैं. दोनों interchangeably इस्तेमाल होते हैं. Explain how the realization principle is applied to recording of Tej's credit sales. As per realization concept, sales are earned as soon as the transaction is made, irrespective of the fact whether the goods are dispatched or not and payment is received or not. Explain how prudence principle is applied in maintaining. It is an expected loss, and as per prudence concept, expected losses are to be recorded as soon as they are expected. ऐसे बहुत सारे हमने कर लिए इसलिए
वर्बली बता रहा हूँ। ऑल डन, ऑल क्लियर, समझ आ रहा है? Tej sells to small number of customers. He has good working relationship with them, and they sometimes recommend him to potential customers. Tej is concerned that his customers are taking a long time to pay him. He is considering charging interest on overdue accounts. Advise Tej whether or not he should charge. Justify your answer. करना चाहिए, करेगा तो वो जल्दी पेमेंट करेंगे, जल्दी पेमेंट करेंगे तो रिसीवेबल्स टर्नओवर कम हो जाएगा, रिसीवेबल्स टर्नओवर कम हो जाएगा तो चांसेस ऑफ बैड डेट्स भी कम हो जाएंगे और लिक्विडिटी क्राइसिस भी कम हो जाएंगे। ये सारी बातें लिखेंगे। उसके बाद क्यों नहीं करना चाहिए? कस्टमर रिलेशनशिप रुइन होगा, कस्टमर्स रेकमेंड करना बंद कर देंगे, बट देन ही नीड्स टू सी बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ करें कि क्या जरूरी है, जल्दी पैसे लेना जरूरी है या अच्छा बनना जरूरी है। एम आई क्लियर एवरीवन? स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स बहुत बार कर लिया। वोटिंग राइट्स लिख देंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स के पास है, प्रेफरेंस के पास नहीं है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लिख देंगे, प्रेफरेंस के पास फिक्स रेट है, ऑर्डिनरी के पास नहीं है। Treasurer is concerned about decreasing bank balance and the increase in shop trade payables. He is looking into the possibility of renting out part of club premises to an art society for 400 per month. Advise the treasurer whether renting out part of it is more suitable way of improving cash flow or whether other methods are more suitable. तो हम लिखेंगे इसमें, लिखें renting premises, renting surplus premises is one of the methods of improving liquidity. He can also he can also बोल रहा है कि बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। He can also offer discounts, charge interest on overdue accounts to improve liquidity. He can offer low priced cash sales, sell surplus non-current assets, और क्या कर सकता है? Sell surplus non-current assets to avoid या to enable या to improve liquidity. Kia has recorded purchase of calculator $5 as an office expense. State 3 reasons why Kia did not receive as a non-current asset. Number 1, materiality concept. Number 2, it's a revenue expenditure. Number 3, to avoid depreciating it over its useful life. Am I clear?
Here is a trader. The total of the trial balance did not agree, and the difference was placed in the suspense accounts. Here later discovered the following errors in the table. Complete the following table to show entries required to correct the error. Cash drawings 200 had been omitted. Drawings debit, suspense credit. A petty cash book payment $31 to Able, a supplier, had been recorded in the column of office expense. So office expense credit, Able debit 31. Sales returns 105 had been correctly entered in the customer's account but had been credited to purchase returns. Purchase returns debit, sales returns debit 105, suspense credit 210. थियरी का सवाल तो नहीं है लेकिन गलती से आ गया तो चलो. A payment for motor expenses 72 had been recorded as motor expenses account as 172. आपने motor expense 100 ज्यादा लिख दिया. Motor expense credit 100, suspense debit 100. A purchase invoice 102 from Able had been debited to Able's account and credited to purchase account. Purchase double amount से debit हो जाएगा, Able double amount से credit हो जाएगा. State three differences between a receipts and payments account and income and expenditure account. Receipts and payments account is made to show liquidity position. Income and expenditure account is made to show surplus of income over expenditure. Receipts and payment account is based on cash concept. Income and expenditure account, एड मैथ की क्लास 5-7 मिनट्स में स्टार्ट होगी. अभी अकाउंटिंग चल रही है. 5 to 7 मिनट्स इंशाल्लाह एड मैथ स्टार्ट करूँ. Is based on cash concept. Income and expenditure account is based on accrual concept. Is made instead of bank account. Is made instead of profit and loss account. Agreed? Ladies, gentlemen, boys, girls, do you all agree? इंशाल्लाह ताला हम थ्योरी आगे कंटिन्यू करेंगे. पेपर वेंसडे को है ना, मंडे को. ठीक है जी, मंडे को इंशाल्लाह ताला थ्योरी कंटिन्यू करेंगे. आप लोग का एग्जाम मंडे के दिन बिजनेस का है. एड मैथ भी है और बिजनेस भी है मंडे को. दोनों एएम में, दोनों एएम में. ठीक है. और इसके बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे को अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से बताओ. ठीक है. तो मंडे को लेंगे क्लास, फिर ट्यूसडे को लेंगे, फिर वेडनेसडे को पेपर है. ठीक है. तो मंडे को इंशाल्लाह ताला हम थ्योरी कंटिन्यू करेंगे आगे. मैं इसको सेव कर लेता हूं ताकि यहां से हम आगे बढ़े. हैंड आउट आप लोग को ऑलरेडी भेज दिया है मैंने. आप लोग अपने तौर पे ये हैंड आउट पूरा कर लीजिएगा. 90 पेज का हैंड आउट है. अभी तो हम लोग कोई 30 पेज पे पहुंचे, 1/3 हुआ है अभी तो. बाकी आप देख लीजिएगा कौन सी थियरियां सिमिलर है. जो सिमिलर थियरियां हैं वो लिख लीजिएगा. जो डिफरेंट थियरियां हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में लिखवाता हूँ. ठीक है जी. सो इंशाल्लाह ताला जिनका एड मैथ का भी सेशन है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में एड मैथ स्टार्ट करता हूँ. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. आई विल सी यू ऑल मंडे इंशाल्लाह फॉर अकाउंटिंग.